वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 7 में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल के हाथों विकास के विभिन्न कार्यों का खातमुहूर्त आज करवाया गया। कारेलीबाग इलाके में वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 16 में राज्य सरकार की जन भागीदारी के विभिन्न विकास के कार्यों का खातमुहूर्त गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक और रावपुरा विधानसभा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल के हाथों आज करवाया गया। वार्ड नंबर 7 में जो साधना नगर सोसाइटी है, वहां पर नई ड्रेनेज लाइन डालने के कार्य का खातमुहूर्त हुआ। इसके अलावा वार्ड नंबर 16 में विश्वकर्मा नगर मियाजी के कारखाने और शर्मा जी की गली में पानी के प्रेशर का काम करवाया गया। तो वहीं वार्ड नंबर 10 में साईनाथ नगर में पानी के नल डालने की कामगिरी हुई। वार्ड नंबर 16 में गुरुकुल चौराहे के पास बरसाती ड्रेनेज लाइन डालने की कामगिरी करवाई गई। इसके अलावा वार्ड नंबर 16 में गुरुकुल चौराहे के पास ड्रेनेज लाइन डालने की कामगिरी करवाई गई। तो वहीं भारत पेट्रोल पंप के पीछे बरसाती ड्रेनेज लाइन डालने की कामगिरी करवाई गई। आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा भी अन्य कई कार्य करवाए गए थे। तब इस दौरान वहां के वार्ड के प्रमुख और साथ ही काउंसिलर्स भी मौजूद रहे थे। साधना नगर सोसायटी जो वार्ड नंबर 7 में आवेली है, એ ખૂબ વર્ષો જૂની વડોદરાના જૂના સોસાયટીઓમાંની એક સોસાયટી છે। આ વિસ્તારની ડ્રેનેજ લાઇન અત્યંત જૂની થવા હોવાના કારણે આ વિસ્તારના નાગરિકોએ અમારા તમામ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ અને સંગઠનના તમામ કાર્યકર્તાઓની સામે જ્યારે રજૂઆત કરી ત્યારે જનભાગીદારીથી આ 23 લાખથી પણ વધારે કિંમતનું લાગતથી લગભગ 800 મીટર જેટલી લાંબી આ લાઇનનું આજે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે। જૂના જે કનેક્શનો છે, તમામ ઘરોના કનેક્શનો નવી લાઇન સાથે જોડાણ કરીને તમામ નાગરિકોને એક સાથે નવી લાઈન મળે એ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ત્યારબાદ આ બાજુની જે એક નવી લાઈન નાખેલી છે તેના અંદર જોડાણ થશે, જેથી કરીને આ વિસ્તારમાં ડ્રેનેજનો ફરીથી પ્રશ્ન ઉદ્ભવે નહીં। આપના માધ્યમથી વડોદરા શહેરના અને ખાસ કરીને રાવપુરા વિધાનસભા વિસ્તારના મારા તમામ નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે આપના વિસ્તારમાં પણ આ પ્રકારની કોઈ આંતરમાળખાકીય સુવિધાની જરૂરિયાત હોય એ વિસ્તારના અમારા કાર્યકર્તાઓ અથવા चूंटायेला प्रतिनिधियों ने जान करशो। तमाम कामों हाथ पर लईने एने परिपूर्ण करवा माटे अमे प्रयत्न करीए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।